वेलकम बैक टू रघु सर मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो एक चैप्टर होता है, इसको अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है ये तीनों पार्ट है क्लास 10 का। एक होता है रेशियो, एक होता है स्टैंडर्ड एंगल, another is identity. Okay, trigonometrical identity. One by one I will discuss. So today we'll discuss what trigonometric ratio. Do you know what is ratio? Ratio is just comparison between the two quantity having same unit. So what you have to compare? So in a right angle triangle, in a specially a right angle, not any other triangle. Suppose ABC is a right angle triangle. So these two are acute angle. A and C are acute angle. Do you know what is acute angle? Less than 90 होता है. So angle C, angle A are acute angle less than 90 degree. We have to find the ratios AB by BC, AB by AC ratio. जो तीनों साइड का रेशियो निकालेंगे by using trigonometry. So there are all together 6 trigonometrical ratio. You remember one by one. Sine, 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 cosine, tangent, cotangent, secant, cosecant. These 6 trigonometrical ratio is sine, cos, tan, cot, sec, cos. Similarly, shortcut we can write it is sine, cosine को cos, tangent को tan, cotangent को cot, secant को sec, cosecant को cosec. You use this. So by using, so sine, only sine, cos, nothing, no, doesn't have any meaning. So with angle, sine A or sine C, only you have to find the ratios using either these two acute angles, so not 90 degree. Okay, so if you find sine A, कुछ बुक में लिखा है परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज. आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट. बच्चों अक्सर गलत करते हैं, कहाँ से परपेंडिकुलर, तो इधर ये परपेंडिकुलर ना ये परपेंडिकुलर, यहाँ से गलत करती है. तो मैं आपको एक इजी ट्रिक बताता हूँ. कोई परपेंडिकुलर, कोई हाइट, ये आपको याद रखना चाहिए. देखिए, अगर आप ये एंगल को आपको चाहिए तो साइन के लिए दिस इज राइट एंगल फेसिंग साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूज. रिमेंबर दिस थिंग. इफ विल फाइंड एंगल सी, इसका फेसिंग, जो फेस करता है इसको बोलते हैं फेसिंग साइड. जो बाकी साइड होता है ये होता है एडजेसेंट. ओके, सो बाय यूजिंग दीज थिंग्स, सो इजीली यू कैन रिमेंबर साइन ए. रिमेंबर, साइन होता है फेसिंग साइड बाय हाइपोटेन्यूज. सो फेसिंग साइड इज व्हिच वन? सी का फेसिंग. सो एंगल सी, नॉट ए, एंगल ऑफ सी. फेसिंग साइड इज व्हाट? ए बी बाय hypotenuse is AC. Got it? So similarly, cos C क्या होता है? Adjacent side. Remember this thing, adjacent side by hypotenuse. So adjacent side कौन होता है? BC by hypotenuse is AC. So here one concept is here. As hypotenuse is the greatest side, so when denominator is greatest, so its value always less than 1. तो साइन और कॉस का वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1. रिमेंबर दिस थिंग. इन हायर क्लास इट इज कमिंग, बट यू हैव टू नो साइन एंड कॉस देयर वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. व्हाई इट इज ऑलवेज लेस देन 1? बिकॉज एसी इज द हाईएस्ट, डिनोमिनेटर हाईएस्ट होगा. तो अगर इसे प्रॉपर फ्रैक्शन, when numerator is less than denominator, its value always less than 1. So it is always less than or equal to 1 हो सकता है. हाँ, तो साइन कॉस हो गया. अभी tan. सो tan एंगल C, tan क्या होता है ना सर? फेसिंग बाय एडजेसेंट, फेसिंग बाय एडजेसेंट. तो फेसिंग क्या होता है? इसे फेस करता है जो AB बाय एडजेसेंट कौन होता है? एडजेसेंट साइड BC. ये तीनों अगर हो गया, बाकी तीन इजीली हो सकता है. सो देखिए, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कैसे निकलते एक बाय एक देखिए. तो साइन ऑफ एक्यूट एंगल, साइन C, साइन क्या होता है ना सर? फेसिंग बाय हाइपोटेन्यूज, फेसिंग बाय हाइपोटेन्यूज. फेसिंग क्या होता है ना सर? AB बाय हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? AC. सिमिलरली cos C, cos इज व्हाट?
adjacent side by hypotenuse. Adjacent side is what? Sir, BC by hypotenuse AC. Similarly, tan C. Tan क्या होता है? Facing by adjacent. Facing by adjacent. Facing क्या होता है ना सर? AB by BC. अगर ये तीनों आपको याद हो गया तो बाकी तीन जो होता है जस्ट यू टेक द रेसिप्रोकल. तो साइन का अपोजिट क्या होता है ना? कोसेक C. कोसेक जस्ट अपोजिट सर AC by AB. सिमिलरली कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक. तो सेक C क्या होता है इसका अपोजिट? तो AC by BC. सिमिलर tan का अपोजिट क्या होता है? cot C. cot जस्ट फ्लिप. सो BC by AB. सो these are BC by AB. These are 6 trigonometrical ratios all together, nothing else. So remember, important thing is you have to find the ratios of angle A or C. These are acute angle, only you have to do these things. So sin का अपोजिट क्या होता है? cosec C. तो sin C, remember reciprocal, sin C equal to 1 by cosec C. Similarly, cosec C equal to what? 1 by sin C. So don't consider sin into C. ऐसे नहीं होता है, just angle है. Without sin, if you write only sin, no meaning. Sin of the angle. Sin C means don't consider sin into C. Okay. So similarly, cos opposite होता है sec. cos C equal to 1 by sec C और sec C equal to 1 by cos C. Similarly, tan C equal to 1 by cot C और cot C equal to 1 by tan C. So this is all about the trigonometrical ratio by using this formula. So how you can find out the sides of the trigonometrical ratio. So here important thing is what? This is a right angle triangle. So do you know Pythagoras theorem? So how can you find if two sides are given, third side? How can you find the third side? Listen. So AC square according to the Pythagoras theorem, hypotenuse square, AC square equal to AB square plus BC square. Remember these things. So these are the what? Summary. Using these we have to find the ratios. So let's do all the questions related to sin, cos, tan, cot. जो रेशियो होता है इसके साथ जो क्वेश्चन होता है वन बाय वन आई विल डिस्कस. लेट्स सी. सो देखिए एक एग्जांपल. इफ 5 tan theta minus 12 equal to 0 then find sin theta. So how can you find? So see, so 5 tan theta equal to 12 ट्रांसफर करो 12 को अनदर साइड. देन tan थीटा होता है क्या सर? 12 by 5. So you know tan theta is what? Facing by adjacent. Suppose this is theta. As you will take either this one is theta or this one is theta. Okay, because this is right angle triangle. So tan theta क्या होता है? According to the formula, facing, this is facing adjacent hypotenuse. Okay. So tan theta क्या होता है ना? facing by adjacent. So facing is what? AB by BC. So this ratio is given. AB by BC is given 12 by 5. Don't consider AB equal to 12, BC equal to 5. Let us assume, because it's a ratio. So let us assume AB equal to 12x and BC equal to what? 5x. Okay. So AB 12x and BC is what? 5x. So how can you find AC? By using Pythagoras theorem. So you know AC square equal to what? AB square plus BC square. So AB is given 12. So 12x का square plus BC is what? 5x का square. So 12x का square 12x into 12x that is 144x square plus 5x into 5x 25x square that is 169x square. Then what is AC? It's का square root. 160 का square root was 13x. Okay, 13x. So now you have to find sin theta. तो sin का फॉर्मूला तो आपको याद है. sin का फॉर्मूला क्या होता है सर? facing by hypotenuse. So facing that is AB by hypotenuse is what? AC. So AB is given 12x by